हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम आपको 20 जीके कैसे ज्योग्राफी ऑफ बिहार से क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया बिहार इज सिचुएटेड। आंसर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ बिहार। आपका आंसर है लैटिट्यूड फ्रॉम 20.21 डिग्री नॉर्थ टू 27.31 डिग्री 15 नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड है फ्रॉम 83 टू 1950 ईस्ट टू 88 डिग्री टू 70.40 डिग्री ईस्ट। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोजीशन रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया in terms of area? 12th position. What is the percentage of Bihar in area in the total area of India? 2.86%. What is the area of Bihar? 96.163 square kilometer. आपका अगला सवाल है, What is the length of Bihar from east to west? 483 kilometer. What is the width of Bihar from north to south? 345 kilometer. What are the boundaries of Bihar? In the north of Bihar, Nepal. In the south of Bihar, Jharkhand. In the east of Bihar, West Bengal. In the west of Bihar, Uttar Pradesh. आपका अगला सवाल है, in how many parts Bihar has been divided geographically? आपका आंसर है in two parts, northern genetic plains and southern genetic plains. Question number 10. What are the geographical structure of northern and southern genetic plains? These are mainly made up of plain lands. आपका अगला प्रश्न है, which part of Bihar the river Ganga passes through? आपका आंसर है, it flows from west to east, dividing Bihar into two parts. 12 number, by which names the northern plain and southern plain are known as? आपका आंसर है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रिवर गंगा इज कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ बिहार, वेयर एज द साउदर्न पार्ट ऑफ द रिवर गंगा इज known as southern plains of Bihar. Why Bihar is known as the plain of Ganga? This state is made up of the soil brought by the river Ganga and its tributaries. This is the reason why it is called the plains of the Ganga. In which direction the slope of the northern and the southern plains of Bihar are? Towards the river Ganga. What is the total population of Bihar? 10,40,99,452 according to 2011 census. What is the percentage in population of Bihar in India? 8.57%. What is the position in population of Bihar in India? Third. Which is the largest district in Bihar? Patna, 5.68%. Which is the smallest district in population of Bihar? Shikhapur. Which is the largest district in Bihar? Gaya, 4,941 square kilometer. Which is the smallest district in area of Bihar? Siwar, 443 स्क्वायर किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार लिव्स इन रूरल एरिया? 90% अप्रोक्सीमेटली। आपका अगला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट बर्थ रेट? आंसर है सिवार, 36.16%। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लोवेस्ट बर्थ रेट? आंसर है नालंदा, 18.64%. Which district of Bihar has the highest population density? Siwar, 1,882 people per square kilometer. Which district of Bihar has the lowest population density? Kaimur, 488 people per square kilometer. आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बिहार? आंसर है 916 वुमेन पर 1000 मैन। Which district of Bihar has the highest sex ratio? Gopalganj, 1015 women per 1000 men.
Which district of Bihar has the lowest sex ratio? Munger 879 women per 1,000 men. What is literacy rate of Bihar? 63.82%. Which state of India has the lowest literacy rate? आपका आंसर है बिहार. What is the average annual rainfall of Bihar? आपका आंसर है 120 सेंटीमीटर. बिहार receives rainfall by which monsoon? आपका आंसर है साउथ वेस्ट मानसून. Which place of Bihar receive highest rainfall? आंसर है किशनगंज. Which district of Bihar receive highest rainfall? किशनगंज district. Which is the hottest district of Bihar? Gaya. Which is the coldest district of Bihar? West Champaran. Which is the highest mountain peak of Bihar? सोमेश्वर रेंज 875 मीटर इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट. आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज लू? वार्म विंड लैंडेड विद डस्ट ब्लोइंग फ्रॉम मार्च टू जून इन बिहार इज कॉल्ड लू. तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों